Good afternoon, student. Today we study about body of carpus, मतलब cervix. cervix के बारे में हम पढ़ेंगे. cervix क्या है? cervix के अंदर आता है body of carpus. पहला body of carpus क्या है? This is a border upper 5 centimeter portion of the uterus, dome-shaped part of the uterus lying above the attachment of fallopian tubes is called fundus. जो ये जो लाइन यूट्रस का ऊपर का डोम शेप बनाती है उसको हम फंडस कहते हैं. ठीक है, यूट्रस के ऊपर होती है, फैलोपियन ट्यूब से अटैच होती है. ठीक है, और द रीजन ऑफ बॉडी ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स एंटर कॉल्ड क्रोनुआ. जो बॉडी एंटर होती है यूट्राइन ट्यूब से उसको कहते हैं कॉर्नुआ. ठीक है, इथेमस जो होता है लोअर साइड में होता है, 0.5 सेंटीमीटर का होता है. कार्पस जो होती है वो लाइंग होती है अबव द इंटरनल अबव इंटरनल ओस. ओस मतलब ऑरिफाइस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर. इट इज protrudes into the vagina, the part of which is above the vagina is called supravaginal portion. सर्विक्स जो होता है वजाना के ऊपर की तरफ होता है और ये प्रोट्रूटेड होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना. और ये क्या करता है, ये वजाना के ऊपर होता है तो उस वजह से इसको क्या कहते हैं, सुप्रावजाइनल पोर्शन. सुप्रावजाइनल पोर्शन कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि वहाँ वजाइना के ऊपर लाइज होता है. ठीक है, फिर द internal os is a narrowing opening between the isthmus and the cervix, while the external os is a small round opening lower end of the cervix. layers क्या है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम में क्या आता है? इट इज द outer peritoneal coat, and myometrium is the thickest layer, consists of thick bundles of smooth muscles fiber held by connective tissue and are arranged in various directions. During pregnancy, three distinct layers can be identified. यहाँ पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल इंटरलेक्टिंग और इनर सर्कुलर. पेरीमेट्रियम में क्या आता है? आउटर पेरिटोनियल आ गया कोट. मायोमेट्रियम में इट इज द थिक लेयर कंसिस्टिंग ऑफ थिक बंडल स्मूथ मसल्स फाइबर held by connective tissue and arranged various direction during pregnancy. फिर आता है एंडोमेट्रियम. द एंडोमेट्रियम इज डायरेक्टली अपोज टू द मसल कोट. यहाँ पे मसल कोट में आता है एंडोमेट्रियम. ठीक है, एंड देयर आर नो submucous layer. It is 1 to 10 mm thick or depending on the hormonal situation. लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस. यहाँ पे द ट्रांसवर्स सर्वाइकल ligaments also known as cranial ligaments or macronidal ligament. ठीक है, ये दो तरह के लिगामेंट होते हैं. द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑल्सो नोन एज cranial ligaments और macronidal ligament.
Okay, then agar the louder the border ligaments hang down like the curtain और जो border ligaments हैं वो नीचे की तरफ curtain जैसे पर्दे जैसे लगे हुए spread होते हैं ठीक है यूट्रस में ठीक है and to slide away to the pelvis उसके बाद वो pelvis से slide हो जाते हैं ठीक है the round ligament arise from the cornua the uterus. The round ligament arises from the cornua at the uterus in front of, from the below of insertion of with each fallopian tube and pass between the fold of the border ligament through the ligament canal and are inserted into each labium majus. The ovarian ligament being at cornua of uterus behind the tube pass down between the fold of ligament to the ovary. फिर आता है रिलेशन क्या है ये देखो कौन सा लिगामेंट किससे जुड़ा हुआ लिगामेंट द ट्रांसवर्स cervical ligament and also known as the cardinal ligament or macronal ligament extend from the side of cervix of to the side wall of the pelvis. The un the uteral sacral ligament pass backward from the cervix of sacrum. The pubocervical ligament pass forward the cervix under the bladder. ब्लैडर की तरफ जाते हुए मैं अभी आपको पिक्चर्स शो करूंगी. नेक्स्ट इज रिलेशन क्या है एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मतलब उनका साथ में जो एसोसिएटेड ऑर्गन है क्या क्या आते हैं तो रिलेशन में क्या क्या आएगा एंटीरियर में द utrovesicles pouch of the bladder posterior rectouterine pouch जो कि डुगल्स एंड रेक्टम में आता है एंड द लेटरल ब्रॉड लिगामेंट जिसको हम यूट्राइन ट्यूब्स कहते हैं ओवरीज और सुपीरियर दी इंटेस्टाइन और इंफीरियर द वजाइना. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ यूट्रस. पहले तो पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग canal or transmission of sperm to the fallopian tube, bearing of pregnancy, supply of nutrient and oxygen to fetus through placenta, expelling of fetus from uterine cavity to exterior at the time of birth, cervical mucus plugs, cervical canal, and avoid ascending infection during pregnancy. ठीक है ये हो गया इसका फंक्शन क्या है पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशनल ब्लीड मतलब
मेनोपॉज तक होता है, पीरियोडिक साइकिल चलती है। फिर आता है कैनाल ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म से वो कैना मतलब जो सर्विक्स की कैनाल है वो क्या करती है, उस कैनाल से स्पर्म इजेक्ट होके फेलोपियन ट्यूब तक जाता है, प्रेगनेंसी बियरिंग प्रोसेस करता है यूट्रस और सर्विक्स, उसको होल्ड करने में हेल्प करता है। फिर आता है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू अ फीटस थ्रू। सो यहाँ पे एंटीरियर में यूट्रोवेसिकल पाउच होता है, पोस्टीरियर में यूट्रो रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है, ठीक है। फिर लेटरल बॉर्डर लिगामेंट होते हैं, यूट्राइन ट्यूब होता है, ओवरीज होते हैं, सुपीरियर इंटेस्टाइन होता है, इंफीरियर में विजाइना होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स इज पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग टिल मेनोपॉज। यहाँ पे मेनोपॉज तक ब्लीडिंग होती है। इसमें सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फीटस थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन और ये सब प्रोवाइड करते हैं। Okay, and then the cervical mucus plugs होता है cervical canal से, avoid ascending to the infection during pregnancy, ठीक है। फिर आगे cervical mucus help sperm transportation, ठीक है।
Blood supply of the uterus in the artery is an ovarian artery. Rectoflexion condition, rectotransverse condition. Okay. Cervical mucus help in the sperm transportation. Cervical canal dilates during labor, allowing fetus to be delivered. Important fact: secretion of endometrium and cervical gland is alkaline, containing water, glucose, mucoprotein, and sodium chloride, which help to forming mucus plug during pregnancy. Cervical mucus has bacteriostatic function. Anterior condition reflection में देखो condition that body bend to sharply back to just above the cervix. ये सारे इसके पोजीशन डेविएशंस हैं कि किधर किधर आता है। मैं अभी आपको जब ये देखिए इस तरीके से, ये तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में आगे बताऊंगी मैं, लेकिन इस ये जो पिक्चर है इसमें ये शो कर रहा है कि किधर किस साइड है। वो जो आप ये पढ़ रहे हो ना, रेट्रो एंटीरियो वर्जम, रेट्रोवर्जम, एंटीरियो फ्लेक्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, ब्लड सप्लाई, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है। स्कारल प्रोनेक्टोमिक फैल्पिन ट्यूब, यूरेटर, स्कैरोयूरेट्राइन लिगामेंट, posterior cul-de-sac, cervix। ठीक है। ये सारा इसके अंदर आता है। तो ये हम यहाँ से कल पढ़ेंगे, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड सप्लाई, लिगामेंट, लिम्फेटाइज ड्रेनेज, ये सब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।